What's up, guys? How you guys doing? This is your favorite mountain biker, Sean Sharma. So yesterday I made a very big mistake. I was changing my. I just got back from MTB Uttarakhand, so I was changing my race tires, and while changing them, I couldn't, I couldn't take the tires off. Tires मुझसे निकल नहीं रहे थे. तो टायर लीवर्स बहुत टाइट थे. टायर लीवर्स काम नहीं कर रहे थे. आई हैव अ पेयर ऑफ कैनडिड टायर लीवर्स. दे weren't working. So I made the stupidly brilliant mistake of using this. So what this did was टायर्स तो चढ़ गए, लेकिन this completely ripped my tubes apart. And जबकि मैं ट्यूब सीलेंट यूज़ करता हूँ, which is the topic this video is actually about. But first I wanted to tell you, never use this to help put on or take off tires on your bikes. This will scratch your rim, and it will also tear your tires and tubes. So that being that, now let's get on to what the video is actually about. So today's video is actually about the cheapest anti-puncture solution out there. I'm sure you guys have heard about tubeless technology, but you also know that the tubeless tires and the sealant and the entire setup costs a lot of money, especially if you don't have a mountain bike that doesn't come with tubeless ready tires and rims. You're looking at a minimum of 5,000 to 6,000 rupees for the entire setup, which is sort of expensive, and that's the reason I don't use that setup. So let me show you what I do for my anti-puncture solution. So basically this is what I use for my anti-puncture liquid. It's a slime tube sealant, as you guys can see. It is also used in cars and bikes as well, but it works very well in bicycles also, and it's tried and tested. I first time used this in September, and ये भी मेरी गलती थी. It's my fault कि मैंने ये स्क्रू ड्राइवर के साथ मस्ती की कि मेरे को पंचर्स लग गए. But until now I had not suffered a single puncture, and I'm talking about at least 7,000-8,000 kilometers of cycling, maybe more. And I'm sure you guys know मैं प्रोफेशनल हूँ. MTB रेसेस के लिए भी जाता हूँ. अभी उत्तराखंड करके आया हूँ. No problem at all. This thing is absolutely legit and works very well. So now let me explain to you guys कि ये बाइक में डलता कैसे है. Alright guys, I'm sure you guys can see that I have opened up the tire already. And मैंने क्या किया है, मैंने अपनी पुरानी ट्यूब को काट के I tried to salvage some of the slime, as in the anti-puncture liquid. It's called Slime. That's the company, Slime. And I thought थोड़ा salvage कर लूँ यार, you know, because I mean, it is not that expensive, but it's not that cheap either. So basically this bottle of slime will set you back by about 1,000 to 1,200 rupees on Amazon. And one bottle will go through 1, 2, 3 and 4 sets of tires. So मतलब 4 tubes आप इससे भर सकते हो. And this slime, unless अगर आप मेरी तरह screwdriver लेकर you don't poke holes into your tubes, will last for at least 2 years. So over time अगर देखा जाए तो it's actually not that expensive. So yeah, basically I salvaged some of the slime, and this is the tube I use usually. It's Schwalbe with the new automotive valve. Goes from 29 right up to 27.5. In fact ये 28C hybrid tires में भी लग जाती है. So it's pretty standard. I like to keep this क्योंकि मेरे पास वैसे तो हाइब्रिड है नहीं, बट आई लाइक टू कीप दिस ट्यूब एज अ स्पेयर, बिकॉज अगर कोई आजू बाजू ग्रुप में किसी को चाहिए हो तो इट वर्क्स वेरी वेल. बट बेसिकली आई लाइक इट बिकॉज इनका जो ऑटोमोटिव वॉल्व है, द स्ट्रेडर वॉल्व, इज़ मच बेटर देन अदर कंपनीज एंड मच स्टर्डियर ऑल्सो, एंड कैन हैंडल द स्लाइम द बेस्ट. सो दिस इज़ द ट्यूब आई वुड सजेस्ट for you guys to use if you are planning this setup. Now let's get behind the setup. Let's do the setup now. Okay, so let's start by first getting the new tube into the tire. So even though it is a automotive valve, it does come with a nice cap, a very nice cap, and it comes with a nut. जो ये nut जो है, I'm not sure if you guys can see,
It is usually only available for Presta walls, but Schwalbe gives it in automotive shredder walls as well. So that's one more reason I like these tubes a lot. So we take the nut and the cap out. And now we're going to put it up into the tap. Tires all set, tube अंदर डल गई है, टायर चढ़ गया. Now one more neat trick that I'd like to tell you guys to avoid snake bite, which is this type of puncture जो अगर हम ट्यूब मुड़ी हुई रहती है अंदर टायर के और हम लोग स्ट्रेट हवा भर देते हैं एकदम हाई प्रेशर, तो ट्यूब मुड़ के ही पिंच हो जाती है. तो वो अवॉइड करने के लिए एक अच्छी ट्रिक है कि आप अपनी बाइक की ट्यूब में जब हवा भरे फर्स्ट टाइम तो फुल प्रेशर मत भरिए, जस्ट फिल से अबाउट 10-15 psi. Take the pump off and then what you can do is nicely bounce your tire a little bit, तो इससे वो जो सारे folds हैं ट्यूब के अंदर वो खुल जाते हैं. That should do it. Now what we'll do is we'll fill the tube up to its max, say about 60-65 psi, just to open up the tube inside the tire, and after that we are going to deflate it again and then add the sealant. और इनफैक्ट एक बार पहले एकदम हाई प्रेशर तक पहुंचाने में क्या होता है कि टायर भी अच्छी तरह बैठ जाता है. The sides of the tires, they settle on the rim properly. So it's good to actually when you're setting up any tire, tubeless or tube with sealant or any type of setup, to fill the tire once with max pressure, deflate it and then fill it again. So the tire sits on the rim. So you heard that noise? That's the noise the tire makes when it settles on the rim. So I think थोड़ा सा और भरेंगे, एक दो और ऐसी आवाजें आएंगी and we'll be done. Now we'll check कि टायर बराबर से बैठ गया. You can just check it with your fingers. Feel आ जाती है आपको. You can make out the line आप feel कर सकते हो. Yes, feels like टायर बैठ गया अच्छी तरह. तो अब इसे डिफ्लेट कर लेंगे और सीलेंट डालेंगे. देखो एक और आवाज आएगी. तो भी एक दो बार बाउंस कर देते हैं. तो एक बार बाउंस करने से भी टायर खुल जाता है और बैठ जाता है. अब जो एक टूल है जो हमें काम में आता है, जो यूजुअली ये स्लाइम की बॉटल के साथ ही आता है, इज द वॉल्व कोर रिमूवर टूल. जो एक कैंप में ही है, बेसिकली वॉल्व कोर निकालने के लिए होता है. स्लाइम के साथ श्रेडर का तो आता ही है, लेकिन अगर आपके पास प्रेस्टा वॉल्व है देन यू नीड अ वॉल्व कोर टूल फॉर प्रेस्टा वॉल्व, जो ऑनलाइन मिल जाता है, अली वली पे मिल जाता है. अमेज़ॉन पे भी है बट थोड़ा महंगा है. बट सिंस मेरा रिम श्रेडर वॉल्व एंड ऑटोमोटिव वॉल्व के लिए सेटअप है, आई यूज़ दिस सेटअप ओनली. तो मैं श्रेडर वॉल्व यूज़ करता हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती. ये रहा वॉल्व कोड जो साथ में निकला है. एंड बेसिकली ये जो आपका वॉल्व होता है, निकालने के बाद
आपकी you can add the sealant through this chamber जो stem होती है ट्यूब के वॉल की उसके अंदर. You put the tire in this angle, it makes it easy to add liquid. The liquid also comes with a nice convenient tube जो ऐसे बहुत अच्छी तरह conveniently घुस जाती है हमारे वॉल की स्टेम में एंड दूसरी एंड सीलेंट पे एंड there you go. That's how we add the liquid into the tire. So you clearly know why it's called slime, because it's green and it's slimy. अब ये वॉल को वापस लगा देंगे. So सीलेंट डल गया. Now we'll fill in. I usually like tire pressure of 40-45. कभी कभार 50 तक भी पहुंच जाता है, बट दैट्स बिकॉज मैं बॉम्बे में रहता हूँ एंड ट्रेल राइडिंग इतनी होती नहीं है, रोड पे मेरी ट्रेनिंग होती है ज़्यादा. बट व्हेनेवर आई वेंचर आउट इनटू द ट्रेल्स दिस डज कम डाउन बिटवीन 35 to 40 वरना ग्रिप नहीं मिलेगी. सो जस्ट अगेन बाउंस द टायर ताकि सीलेंट टायर में हर जगह फैल जाए. And we are set. Cheapest and the best solution for tire puncture resistance solution out there in the market. I know there are some people जो आपको बोलेंगे ये cheap सा 300-400 रुपए का 1 लीटर का आपको टायर सीलेंट मिलता है गाड़ियों का, but I don't trust that. Slime is trusted. Is used, this sort of a setup is used by many amateurs all around the world and I've used it, I've raced on it. मैंने ये कम से कम 6 से 7 हज़ार किलोमीटर यूज़ किया है और जो ख़राब भी हुआ वो मेरी गलती से हुआ है क्योंकि मैंने एक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके अपनी टायर चढ़ाते वक्त अपनी ट्यूब्स में छेद कर दिए और ऐसे 4-5 छेद किए कि वो इतना बड़ा छेद तो कोई भी सीलेंट सील नहीं कर सकता. That's what I did here. So this is a very good setup. I totally recommend it to you guys. And yeah, that's about it. Make sure you like and share the video and subscribe to the channel अगर आपको ये useful लगी. And until next time, bye bye.